All right, we're switching tracks very quickly to an update to a story we brought you right in the beginning of this show. Remember that we brought you details of a flight that was flying from Moscow to Goa, a chartered flight full of tourists that was made to land yesterday because of a bomb threat in Jamnagar in Gujarat. We have an update now. As we speak, passengers are being escorted to the flight in groups one by one. Remember, yesterday they were deplaned as the plane was searched. The Gujarat ATS had actually joined in that entire operation. The visuals you're seeing right now of passengers being taken one by one, their luggage is being frisked as we speak. According to sources, it might still take 4 more hours before the plane actually takes off again. I believe NSG's bomb squad is also present on the spot. We have a ground report for you. We'll go to that quickly. Take a look. अंतरराष्ट्रीय चार्टर फ्लाइट में बम होने की जो बात सामने आई, उस बात को लेकर ही जामनगर में अंतरराष्ट्रीय प्लेन का इमरजेंसी लैंडिंग किया गया। जिस प्रकार से ये दृश्य आप देख रहे हैं जामनगर का, ये एयरपोर्ट है, वहाँ कल रात से ही 9:49 पे यहाँ ये प्लेन है वो आ चुका था और 9:59 पे यानी 10 बजे के तकरीबन आसपास यहाँ ये प्लेन का लैंडिंग भी हो चुका था। तभी से पूरा ये एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट जामनगर पुलिस, कलेक्टर और अन्य जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो भी यहाँ आ चुकी है। खास तौर पे बात की जाए तो जामनगर के अलावा देवभूमि, द्वारिका और मोरबी के एसपी भी यहाँ आ चुके हैं, बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ आ चुकी है और सुबह तक यहाँ जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं, चेकिंग की कार्यवाही भी चल रही है। अभी भी पुलिस है यहाँ से निकल रही है, आ रही है, जा रही, पूरी रात भर ये मामला है वो चलता रहा है। अभी कलेक्टर सौरभ पारगी है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि अभी भी छानबीन चल रही है। हालांकि कोई संदिग्ध पदार्थ अभी तक मिला नहीं है, फिर भी अभी जो जांच है वो जांच कमेटियां आई हुई है। खासतौर पे एनएसजी कमांडो भी यहाँ आ चुके हैं और पूरी तरह से तपास है वो कर रहे हैं। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18 जामनगर, गुजरात। Okay, as we told you a little while earlier, the Russian embassy has also issued a statement. They'd said that they've been alerted about this entire story. Remember, yesterday at about 9 in the evening, the flight was first diverted. It was on its way to Goa, but it was diverted to Gujarat's Jamnagar. This was a move that was triggered after a bomb threat was received. Now, what I will try to also seek clarity on from my reporter is whether the bomb threat was given directly to Azure Airlines, which is the chartered flight, or if it was given to the Goa Air Traffic Controller. But we do have a report that a bomb threat was received and the flight was, as you can see, diverted. It was made to land. And once it was made to land, you had teams on the ground actually check the flight. Now, let's go over to my colleague Janak Dave. He's joining us right now to bring us more details on the entire story. Janak ji, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. Janak ji, आप हमें और जानकारी दे सकते हैं, please? कल रात से 11 बजे से ये जो मॉस्को गोवा फ्लाइट है उसको लैंड होने के बाद उसका जो फ्रिस्किंग है, खासतौर पे जो बॉम्ब स्क्वाड और बाकी एजेंसियों द्वारा, वो अभी भी जारी है। अभी के जो लेटेस्ट जानकारी अभी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो भी यात्री हैं उनका जो सामान है वो एक एक कर ग्रुप में सभी यात्रियों को रनवे पर फ्लाइट के पास लाया जा रहा है और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सामान वहां पर रखा है, उसकी फ्रिस्किंग की जा रही है। साथ ही में बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम थी वो उसके पास समय। जनक जी, एक सेकंड जुड़े रहिए. We'll try to reconnect Janak Dave, my colleague on the ground in Gujarat, with a better connection, because his connection is experiencing a little bit of frequency there, as you heard. When we are able to connect with him again, we'll ask him more questions. I just want to bring you more details till we do. According to the district collector in the area, there were 244 passengers on board. That number, remember, includes crew people also. So 236 passengers, 8 crew members that were on the flight, and total 244 people that were evacuated safely, according to the DM. Now, they'd been guided initially to the lounge. After that, as you can see, this checking process began, and it's been going on for a while now. Remember when my colleague Abhishek joined us earlier, he brought us larger context to this story. Officials across Russia have been on high alert over the last few months. Remember, the Russia-Ukraine war very much in full swing, having started almost a year ago. It started towards Feb. It's about to complete a year. Russian officials remain in high alert, therefore, of any such news. They therefore continue to make multiple checks. You'll remember earlier this month, we brought you multiple reports of Russian nationals who actually died in Odisha. Since then, this is the first report we're bringing you
from the embassy. Now, we're going to move on. I believe we have another breaking news here. All right, this second report is an update on the same story. I believe the bomb threat on the Moscow-Goa chartered flight has been cleared. The NSG, which was doing checks on the ground, has said that they haven't found anything suspicious. Remember, they've been checking the flight since about 10 p.m. last night. So multiple rounds of checks with various different teams have actually been conducted. The flight is expected to leave from Jamnagar to Goa. Remember, it was originally going from Moscow to Goa. It was made to land in Jamnagar after a bomb threat. Now it's going to take off again between 10:30 a.m. and 11 a.m. today. So it's still got about 2 hours to go before it takes off. All bags have been thoroughly checked, according to the Jamnagar Airport Director. These are the updates we have for you right now. And all clear coming in from forces on the ground that are currently doing those checks. As I told you a little while earlier, the Gujarat ATS, that is the Gujarat Anti-Terrorism Squad, had joined the exercise in the early hours of the exercise starting yesterday. So the exercise started at about 10 p.m. and in the early hours, it was joined by multiple different security teams. Now, just to bring you a few more details, Azure Air is a chartered airline, which means that it can be chartered to take, it's not like a national carrier, it is chartered to take passengers from one place to another. It is a Russian airline. And according to details that we have, the passengers were Russian. I'll try to bring you clarity, though, on if all of them were Russian. Let's go over to my colleague, Janak Dave, for more details. Janak जी, आपसे दो प्रश्न पूछने हैं. आप हमें बता सकते हैं, हमें बताया जा रहा है 244 पैसेंजर्स थे सर प्लेन पे. क्या वो सारे रशियन नेशनल्स थे सर? पहले हमें ये बताइए. सर, हमें ये भी बताइए, जो बॉम्ब थ्रेट था सर, वो गोवा के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मिला, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मिला, या जो अजूर एयरलाइन था उससे मिला? आप हमें क्लैरिटी दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो 236 यात्री पैसेंजर प्लस 8 क्रू मेंबर, ऐसे करके 244 का आंकड़ा पहुंचता है. ये मॉस्को से फ्लाइट चली और उसको गोवा जाना था. ये चार्टर फ्लाइट है. वहां पर अजूर, जो सबसे बड़ी रशिया की एयर कंपनी है, उसकी ओर से चार्टर फ्लाइट सीधा उसको मॉस्को से गोवा आना था. और कल शाम को लगभग 6-6:15 का वक्त था, गोवा एटीसी को ये मैसेज मिला था ईमेल के जरिए कि जो आपकी चार्टर फ्लाइट मॉस्को से चली है उसमें बम है. उसके बाद भारतीय एक सेकंड सर, फिर से क्लैरिफाई कर सकते हैं, किससे मिला था ये ईमेल? अजूर को मिला था या गोवा के ट्रैफिक अथॉरिटीज को मिला था? आप बता सकते हैं? जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोवा एटीसी को ये ईमेल मिला और उसके बाद भारतीय एयर स्पेस में जैसे ये फ्लाइट आई, उसके बाद नियरेस्ट लोकेशन पे जामनगर एयरबेस था, तो उसके बाद सीधा जामनगर पे उसको उतारा गया. और कल रात से 11 बजे लगभग 9:49 यानी 21:49 ये 9:40 को उसको फ्लाइट को लैंड किया गया. उसके बाद से लगातार पैसेंजर जो थे वो उनको सबको उतारा गया था सुरक्षित तरीके से. और उसके बाद से वहां पर फ्रिस्किंग की जा रही है. एनएसजी की टीम वहां पर भेजी गई है, जो विश्व के पास अत्याधुनिक जो सामान है, इक्विपमेंट है, उससे अभी फ्रिस्किंग की जा रही है. अभी की लेटेस्ट जो जानकारी है कि सभी यात्रियों को एक एक कर ग्रुप में जो जहां पर आइसोलेशन वे पर ये फ्लाइट खड़ी रखी गई है, वहां पर सबको यात्रियों को ग्रुप में एक एक करके लाया जा रहा है. उनके सामान का आइडेंटिफिकेशन करके उस सामान का भी फ्रिस्किंग किया जा रहा है. तो उसके बाद अभी भी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी 3 से 4 घंटे लग सकते हैं. लेकिन अब तक आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तब अब तक तो किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध चीज या कोई एक्सप्लोजिव चीज अब तक नहीं मिल पा रही है. सारे यात्री जो मॉस्को से चले हैं वो सभी रशियन हैं और उनको गोवा पहुंचना था. 4 घंटे के बाद जब एसओपी के मुताबिक जब बम स्क्वाड की ओर से आधिकारिक जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसके बाद ही ये फ्लाइट है वो यहाँ से जामनगर से गोवा के लिए उड़ान भरेगी. ओके, एंड जनक जी, इज इट टू अर्ली टू से, डू वी हैव एनी मोर डिटेल्स ऑन किसने ये ईमेल भेजा? वैसे डिटेल्स अभी तक मिले हैं क्या? देखिए, अब ये एटीसी गोवा को जानकारी वहाँ के स्थानीय प्रशासन को देनी है. यहाँ से मामले में फिर जांच भी होगी. और नॉर्मल जब ईमेल आता है तो उसके आईपी एड्रेस के आधार पर जांच होती है, तो वो संदिग्ध तक पहुंचना जो गोवा पुलिस है उसके बाद में देखेगी. लेकिन अभी तक की ये जानकारी आ रही है, जहां तक गुजरात के संदर्भ का सवाल है, कि गोवा एटीसी से ये जामनगर एटीसी को ये जानकारी. Okay, sir, just stay with us. Sir, just stay with us. Premsukh Delu, he is the DSP from Jamnagar. He's actually with us on the phone. Sir, good morning, sir. Thank you so much for joining us, sir, here on the show. Sir, can you tell us about the investigations that have taken place since late last night?
जी मैम, ये फ्लाइट है इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ जामनगर के अंदर 9:50 पे हुई। हाँ फिर जी। 236 है वो पैसेंजर थे और 8 क्रू मेंबर थे। सभी को तुरंत है वो नीचे उतार के सभी की चेकिंग फ्रिस्किंग की गई थी। उसके बाद में एनएसजी की टीमें यहाँ पर पहुंची थी और एनएसजी की टीम के द्वारा अभी और लोकल पुलिस की जो बम स्क्वाड टीम है और उनके द्वारा लगेज की जांच है वो भी की जा रही है और लगेज की जांच कंप्लीट होने के बाद में हम आपको कुछ बता पाएंगे। ओके, एंड सर कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स मिली थी क्या सर? आप कुछ भी अभी तक डिटेल्स हमें बता कुछ नहीं सकते हैं? मिला। ऑलराइट। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ओके, एंड सर एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना है, हमें बताया गया है कि अभी भी 2 और घंटे लगेंगे, 10:30 बजे तक लगेगा। सर आप बता सकते हैं हमें अगले 2 घंटे में और क्या इन्वेस्टिगेशन चलने वाला है? अभी लगेज का जो चेकिंग है वो चालू है। लगेज का चेकिंग कंप्लीट होने के बाद है वो वापस जो पैसेंजर है ये विमान का क्लियरेंस मिलेगा। क्लियरेंस मिलने के बाद में पैसेंजर वापस अंदर बैठेंगे और अंदर बैठने के बाद यानी लगभग 2 से 2.5 घंटे टाइम कम से कम और लगेगा। ओके, एंड सर एक आखिरी प्रश्न आपसे, हमें बताया जा रहा है गोवा एटीसी को ईमेल मिला था, फिर उन्होंने आपके गुजरात अथॉरिटीज को बताया। सर अभी वो इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किसने वो ईमेल पॉसिबली भेजा? अभी मैम हम है वो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो विमान की जो लगेज और जो भी इमरजेंसी आई थी उसको क्लियर करना है। उसके बाद हमारा ये जांच का विषय है। Alright, Premsukh ji, thank you so much for joining us here on the show. इस जानकारी के लिए धन्यवाद. My colleague Janak Dave is also with us. My colleague Arunima will also be joining us in just a few minutes. Till she does, let's go back to Janak Dave right now to understand more. Janak ji, we just spoke right now to Premsukh Delu. He was the DSP of Jamnagar. वो भी हमें कुछ initial details दे रहे थे. सर आप हमें बता सकते हैं इन passengers के बारे में? I think sir you said total number was 244 passengers on board, 236 passengers and 8 crew members. Sir, were the passengers largely calm in the last few hours? I'm assuming they were also very worried, very frightened too. बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो पैसेंजर है उसमें रशियन 6 स्टार हैं, ऑस्कर वो भी वहाँ पर हैं और उसके बाद जो भी यहाँ पर यात्री रहे जिनको उतारा गया था उसके बाद उनको रिफ्रेशमेंट और बाकी सारी व्यवस्था जामनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सारी की गई है वहाँ पर। और उसके बाद अभी तक जो जानकारी है कि एक एक कर सबको सामान उनका जो खुद का है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। यात्रियों को पूरी रात जगना पड़ा है क्योंकि इतने समय में उनको पहले पहुंचना था। वैसे भी ये फ्लाइट लगभग 10 से 12 घंटा पहले ही लेट चल रही थी जब मॉस्को से चली। तो ऐसे में अभी यात्रियों के लिए और भी 2 से 3 घंटे रहेंगे जहां पर उनको ये वेट करना पड़ेगा। और जैसे प्रेमसुख डेलू ने जिस तरीके से कहा, एक एसओपी होती है जब मिड एयर इमरजेंसी जब भी होती है, आप जैसे जानती हैं, तो मिड एयर इमरजेंसी के बाद जब फ्लाइट लैंड होती है इमरजेंसी में तो फिर वो सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन होते हैं, सारे एसओपी मेंटेन होती हैं। तो फिलहाल अभी फ्रिस्किंग जब फाइनल गो हेड आ जाएगा कि एटीसी से क्लियरेंस मिलेगा, फ्लाइट क्लियरेंस होगी, उसके बाद ही ये उड़ान भर पाएगी गोवा के लिए। जनक जी एक सेकंड हमारे साथ जुड़े रहिए. I'll go over to my colleague Arunima right now. Arunima, thank you so much for joining us this morning. Arunima, could you also bring us an update? What are your sources telling you about the search operations that have been going on since 10 p.m. last night? So the procedure that has been followed so far is that all the passengers were asked to disembark and they were put in a secluded corner. Their entire in-person frisking was carried out. The luggage, the hold in which the luggage goes, that was scanned. Each luggage was individually checked, both by using mechanical and physical elements that were present at the Jamnagar facility. And the body of the aircraft has also been thoroughly scanned. So the cabin baggage section, the seats, etc., the washroom, nothing has thrown up anything suspicious so far, is what sources on the ground are telling me. There is the NSG bomb disposal squad that is there. There is, of course, the local police, the civil aviation security authorities, the other agencies. They're all present. So far, what they tell me is that their work of manual frisking, luggage frisking, checking of the aircraft body, it's almost completed is what they're saying. And thankfully, nothing has been found amiss so far. So in the next, maybe in an hour or so, we should get that all clear signal. Okay, all right. Arunima, if I could also understand from you,
what coordination remains at the highest level, the Home Affairs Ministry level, when it comes to the larger investigation that's obviously going to follow in terms of the source of the email, etc.? So, of course, a police case will be registered if this turns out to be a hoax. Like I said, so far nothing has shown up, but that till we get that all clearance certificate, we can't conclusively say what was the motive. But if this turns out to be a hoax, then of course the person who is responsible for delaying this and putting this entire establishment, the security establishment, there will be attempt to fix accountability on that person. We believe there was an email that was searched, so there will be technical investigation as well. And the source of the email, the place from where the email has been sent, what server was used, what internet protocol was used, all of that will be investigated. But that is, I think, the second stage. At this point, because there was a bomb scare, because, Moscow was involved, we all know geopolitically Moscow is very sensitive right now because of the Ukrainian situation as well. So the first thing that the authorities wanted to rule out was any truth to the threat of a bomb being present on board. And like we have been reporting, since 10 o'clock last night, it's almost 12 hours now, the searches have been carried out. Nothing untoward has been thrown up so far. We're hoping that the all clear certificate will come out soon. All right, Arunima, thank you so much for those details. All right, we're awaiting that update. It is time right now for a short break. You're watching the morning news right here on CNN News 18, which means that in just a few minutes from now, we will return with all of the country's top stories.